Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the differentiator and integrator circuits using operational amplifier. This topic is useful for BSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of this topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. We first describe a differentiator circuit. So what is a differentiator? A differentiator is one that produces an output that is proportional to the differential of the input voltage. In figure 1, we have shown you a differentiator circuit using an operational amplifier. तो देखिए ये आपका ऑप एम्प है, ये आप इसका इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है. The non-inverting input is grounded. Between the inverting input and the output, we have a resistance R, and we apply the input voltage here Vi through a capacitor C to the inverting input. मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये कि इन्वर्टिंग इनपुट पर जो पोटेंशियल है वो दिस इज नियरली जीरो. ऐसा इसलिए कि ये पॉइंट जो है, द पॉइंट ए, आई से इट, दिस इज एट वर्चुअल ग्राउंड. व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ग्राउंड? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अपने आइडियल लेक्चर में, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक. यहाँ फिर आपको मोटे तौर पर बता दे रहे हैं कि ये होता क्या है. व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड? देखिए ये आपका ऑप एम्प है, नॉन इन्वर्टिंग, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज योर आउटपुट, एंड वी हैव इनपुट हियर इज V1 and this input is your V2. The differential gain is defined as AD is equal to V0 upon V1 minus V2. जो दो इनपुट पे पोटेंशियल लगे हुए हैं उनका डिफरेंशियल कितना है, डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2. आउटपुट क्या है, V0. सो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल गेन. ठीक है. और AD का वैल्यू जो है, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 to the power 5. ठीक है. Therefore, this gives you V1 minus V2 as V0 upon AD. The output voltage that can be obtained from an op amp without distortion is restricted to plus minus 13 volt, and this value is 10 to the power 5. What is the value? This value is equal to 0.00013 volt, and this is nearly equal to 0. Therefore, we say that V1 is nearly equal to 2. मतलब कि दो ऑप एम्प के दोनों इनपुट पर पोटेंशियल का मान नियरली इक्वल होता है. ठीक है. तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम मान लें पोटेंशियल हमारा V1 है और ये पोटेंशियल हमारा V2 है, तो V2 कितना है, V2 इज 0 बिकॉज दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, so V1 will be 0. So even though this terminal is not grounded directly, its potential is 0, that of the ground. इसलिए हम बोलते हैं कि ये टर्मिनल जो है सो वर्चुअल ग्राउंड पर है. ओके. So write the equation for voltage across the capacitor. So Vi will be how much? Vi is Q upon C. ये आप जानते हैं. Voltage equal to charge upon capacitance, where Q is the charge on the plates of the capacitor and C is its capacitance. Equation 1 को differentiate कीजिए. So this gives you dVi upon dt. C is a constant, so this is 1 upon C, and then dQ upon dt. dQ upon dt is the rate of flow of charge, and this is nothing but the current. So this is I upon C, where I is the current through the capacitor. अब देखिए करंट थ्रू द रेजिस्टर कितना होगा. ठीक है. ये आपके पास ये जो था यहाँ पर देखने के लिए, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, दिस इज ग्राउंडेड.
and we had a potential 0 here and this was a resistance R. ठीक है, ये है पोटेंशियल आपका V नॉट और यहाँ पोटेंशियल है 0. ठीक है, पोटेंशियल हियर इज नियरली 0. तो ये करंट यहाँ से जो आ रहा था वो करंट कहाँ जाएगा? वो जाएगा सीधे इधर. इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस काफी ज्यादा है. सो नो करंट विल फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द operational amplifier. So this current I that flows through the capacitor will flow through the resistor. So I will be equal to 0 minus V naught divided by R. So this is minus V naught upon R. So inserting minus V naught upon R for I in equation 2, what do you get? dVi upon dt is minus V naught upon RC. So this much is clear. So from preceding equation, we have V naught is minus RC into dVi upon dt. So this RC is a constant. So dVi upon dt is the differential of the input voltage Vi, and therefore the output voltage is proportional to the time derivative of the input voltage with a proportionality constant minus RC. Let us see what happens if we have a signal Vm sin omega t as Vi. So let the input signal voltage be Vi equal to Vm sin omega t. Then what will be the output? Differentiate Vi and put it in equation 3. So you get V naught will be equal to minus RC omega Vm cos omega t, which increases linearly with increasing frequency. यदि frequency बढ़ती है तो इसका मान बढ़ेगा. It therefore also amplifies the high frequency component of the amplifier noise. Amplifier में सिर्फ एक ही frequency amplify नहीं होती है. Even though you apply a signal which has a single frequency, but because of noise present, we have a number of frequency components. So the different frequency components also get amplified. So because of this reason, the differential circuit is rarely used in analog computers. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इंटीग्रेटर क्या होता है. An integrator produces an output that is proportional to the time integral of the input voltage. An integral circuit using an op-amp is shown in figure 2. ये फिगर में हम दिखा रहे हैं आपको इंटीग्रेटेड सर्किट यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. बेसिक डिफरेंस क्या है फिगर 1 और फिगर 2 में या डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में? द पोजीशन ऑफ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर्स हैव बीन इंटरचेंज्ड. देख लीजिए आप. ठीक है. So since the point A is at virtual ground and no current flows into the inverting terminal of the op-amp because of its high input impedance, the entire current that flows through the resistor R passes through the capacitor. ठीक है, तो ये देखिए, ये करंट अगर यहाँ से जा रहा है, ये करंट अगर I है, and if a current I passes through R, the same current passes through the capacitor C here. ठीक है, तो देखिए I कितना होगा? Vi minus 0 upon R, and this is current is the rate of flow of charge, so this is dq upon dt. This is equal to ddt upon Cv. आप जानते हैं the capacitance of the capacitor is charge upon voltage. So we have Q is equal to C into V. ये आप पहले पढ़ चुके हैं. So what is V here? V is the potential difference across the plates of the capacitor. So this is equal to potential at the point A is 0. Potential the output is V0. The difference is 0 minus V0 is equal to minus V0. So this is the potential difference across the plates of the capacitor, and Q is the charge on the plates of the capacitor. Therefore, from equation 6, what we get? I equal to Vi upon R equal to minus ddt of Cv0. Minus n क्यों आया? Because of this equation here.
v की जगह लिख दिया हमने माइनस वी नॉट. सो दिस इज द इक्वेशन नाउ. सो आई डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम टाइम 0 टू t इज इक्वल टू माइनस सी वी जीरो. आप जानते हैं ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है. सो इफ यू इंटीग्रेट दिस you get cv naught. If you integrate this, you get idt, and therefore v naught from this equation is minus 1 upon c integral of idt. The, the limits are from 0 to t. This is equal to minus 1 upon c integral vi upon r into dt. We have put the value of current I in terms of vi and r. So v naught is minus 1 upon rc into integral of vi dt. The limits are from time 0 to t. So V naught is directly proportional to the negative integral of the input voltage and inversely proportional to the time constant RC. So if the input is a sine wave, the output will be a cosine wave. Or if the input is a square wave, output will be a triangular wave. So this is the description of an integrator. An integrator finds application in ramp or sweep generators, in filters, and in simulation circuits in analog computers. So this is all about differentiator and integrator circuit using operational amplifier. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह presentation अच्छा लगा हो तो इसे like करें, share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.